Well, hello there. Thanks for tuning in to your favorite news destination. The top headlines we're tracking for you at the top of this news wheel on your screens next. A man arrested from Maharashtra's Thane early this morning for allegedly attacking Saif Ali Khan in his Bandra home was produced before the court and has been remanded 5 days of police custody. The accused, identified as 30-year-old Muhammad Shariful Islam Shahzad, was caught near Hiranandani estate in Kasar Vadavali. This is about 35 odd kilometers away from Saif Ali Khan's residence. Mumbai Police says the burglar who broke into actor Saif Ali Khan's Mumbai home and stabbed the actor 6 times could be, in fact, a Bangladeshi national. He's got no valid documents on him. Prima facie, the investigation looks like the accused entered India illegally a few months back, did a couple of menial jobs and kept changing his name. Meanwhile, 3 people were arrested in connection with the death of a man from Kerala who had joined the military support service in Russia on the front lines, that too on false pretext. Donald Trump, the president-elect, lands in Washington ahead of his inauguration as U.S. president. Fireworks kickstart the celebrations in Washington. Preparations for the 500 attendees is underway as security is tightened across Washington, D.C. Finally, the guns fall silent as Israel-Gaza ceasefire finally comes into effect after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had ordered not to begin the ceasefire in Gaza until Hamas issued the names of the hostages to be released. Meanwhile, just like you saw, thousands rallied in Tel Aviv's Hostages Square hours before the ceasefire was due to start. Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal writes to Prime Minister Modi seeking land to build homes for sanitation workers, all in his letter to PM Modi. He sought the centre's support for his scheme to provide homes to sanitation workers in Delhi at easily monthly installments. In a tragic development, Olympian Manu Bhakar's grandmother and uncle die in a Haryana road accident. The two-wheeler they were riding on collided with a car. And metro rides in Bengaluru are set to become more expensive as the Bengaluru Metro Rail Corporation Limited, BMRCL, has approved a recommendation to increase the fares by about 40 to 45%. A major breakthrough vis-a-vis Saif Ali Khan's stabbing case. Let's break this down for you very quickly. After an intense 72-hour manhunt, the Mumbai Police have now arrested a man accused of stabbing Bollywood actor Saif Ali Khan at his Bandra residence in the early hours of the 16th of January. Now, the accused has been sent to 5 days of police custody for further interrogation, though police had earlier sought 2 weeks remand. The public prosecutor said that the accused's intention does not seem to be just theft. There could be some other motive behind breaking into the house. The lawyer representing the accused said that the accused is not a Bangladeshi but an Indian citizen. He has documents to prove this as a matter of fact. बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है कि वो प्रूव कर सकते हैं कि वो काफी सालों से हैं। लेकिन कोर्ट में ये बात रखी गई कि इस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने भेजा होगा मारने के लिए, इस तरह की बात की गई। कोर्ट में रखा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, क्या कहना चाहिए? वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक
एलिगेशन। आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ एज पर 43A के ऊपर, उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है, वायलेशन हुआ है। सैफ अली हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, आपका कहने का ये मतलब है? सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है कुछ? सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस है सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनकी काफी विटनेसेस है, काफी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं है। Now addressing the media, DCP Zone 9 Dikshit Gautam confirmed the arrest, revealing that the accused, identified as Muhammad Shariful Islam Shehzad, prima facie seems to be a Bangladeshi national who had entered India illegally after changing his name. He had no valid documents, but the lawyer representing the accused had to say otherwise. As per the police, the accused worked with a housekeeping agency and had never been to Saif Ali Khan's residence before the attack. He entered Saif's house with the intention of theft, is what the cops say. But then again, the public prosecutor, whilst seeking that 2-week remand, had mentioned that the theft angles seems to be quite a trivial one in this particular matter. There needs to be a thorough probe as to what was the actual motive of the accused. Now, the accused was arrested after a massive operation spanning 72 hours involving over 100 investigating officers. Mumbai Police teams searched more than 15 cities and detained 6 suspects before finally identifying and arresting Shehzad. Listen in to one of the eyewitnesses and what they had to say as well. And before you do that, listen in to that exclusive press conference that we're bringing to you of the Mumbai Police. आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। सो देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस टू anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a बांग्लादेशी नेशनल। तो इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। मैं अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वी विल लेट यू नो। जो है पुलिस ने कल रात को सैफ अली खान के आरोपी को अरेस्ट किया है। अपना नाम बता दीजिए। मोनू मेरा नाम है। रात में आए वो 8 बजे। पहले लेबर कैंप ढूंढे, लेबर कैंप में मिला नहीं उनको, तो उनको टिप मिली कि इधर छुपा है। फिर इधर आके ढूंढने लगे, बार बार हम लोग को आके पूछ रहे किधर है, कौन है, मगर साहब हमको मालूम है। तो उनके पीछे मैं भी था,
टोटल नहीं बोलूं 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले इसके ऊपर मतलब भरने भरने के ऊपर मिला, उसको पकड़ के फिर वो लेके गए। आपको मालूम था यहाँ पे कोई छुपा है नहीं, कैसे क्या? बिल्कुल नहीं। और पुलिस वाले हम लोग को पूछ रहे तुम लोग को मालूम नहीं यहाँ पे कौन रहता है क्या? सब हमारे खेतीबाड़ी हम लोग ये संभालते, वो भी देखते बैठे। कितने बजे कुल यहाँ से उसको पकड़ा है? 3 बजे। 3 बजे रात के। आपको जब भी पकड़ा अभी तभी आपने देखा था कि पुलिस लेके गई? हाँ, ऐसे लेके गए, यहाँ से लेके गई, मारते मारते लेके गए। मुंबई पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और मेरी बात वहां के श्री जो डीसीपी दीक्षित जी से मेरी बात हुई कि इस केस में, तो उन्होंने मुझको बताया है कि ये जो घटना जो हुई है, आरोपी जो था वो चोरी के इरादे से आया था और ये घटना इस प्रकार ऐसे हुई है। और मुझे पता चला है कि वो जो शख्स जो व्यक्ति पकड़ा गया वो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है करके अभी सरकार उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के नहीं मिले हैं। Very, very sad, very sad. Only wish that Saif becomes all right. God, praying to God कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक से वापस आ जाए. But it's very sad. But it looks like ये एक दिन की ये सोच नहीं है, बहुत दिनों से प्लान करके फिर किया गया। ये एक दिन का मामला नहीं है कि आज घुसा और आज कर दिया। बहुत दिन लगाया, या तो बिग गैंग इज देयर और इवन इट इज इंडिविजुअल। ये बहुत दिनों से प्लान करके पूरा प्लानिंग के साथ किया है, ये एक दिन का मामला नहीं है। देखिए अभी क्या करें, वाई इट इज हैपनिंग दैट्स ऑल्सो सरप्राइज मी। देखिए ना, अभी आज की तारीख में घर में घुस के कोई अटैक कर रहा है, विच इज बट शायद आई ओनली प्रे दैट Saif becomes all right. Now, just a short while back, I spoke to retired ACP Mumbai Police Dhanraj Vanjari. Listen in and take a look at how he's looking at these developments and how major a breakthrough is this. Next steps will be very crucial. Let me tell you, everybody is listening to your channel. Next step is very crucial. The Deputy Commissioner has said in the press conference that the motive of accused was a theft. Now, the first and foremost question comes to the mind that since ground floor to 12th floor, there was no floor where the rich people, or there was no floor where there could have been the intention of theft or committing robbery. Why it is 12th floor and specifically the flat of Saif Ali, who is a renowned celebrity. Important thing is his point of entry, the way he is coming through staircase and the way he is vacating the staircase, it seems he is a habitual intruder. The whole question of investigation goes around the intention of the crime. What was the intention? And if intention is only theft, then why it is theft? Where the people, rich people, where he would have committed theft very easily. So, according to me, I can assure you one thing. It's a big challenge for my police officers fellow to crack this case through and through, point to point, inch to inch, centimeter to centimeter. So it's a big challenge, and I think in the fair interest of justice, we should give enough time to my police fraternity. The battleground in the national capital, needless to say, is heating up, ladies and gentlemen, and the upmanship and the political brinkmanship, especially between the AAP Vs Party and the BJP, with accusations flying left, right and centre. A fresh one. Let's break that down for you, shall we? As the voting for the Delhi Assembly poll nears, war of words between the AAP Vs Party and the BJP continues to intensify. Now, the AAP Vs Party has accused the BJP supporters of pelting stones at the convoy of former Chief Minister Arvind Kejriwal during his campaign in the New Delhi constituency. Let me break down the visuals that you see on your screens. To the left side is, of course, New Delhi's BJP candidate Parvesh Verma, who alleges that this convoy that you see on the right side actually ended up hitting some of the youth of the BJP party. Meanwhile, Arvind Kejriwal and the AAP Vs Party team allege, and that's why we've got that circle for the treated video, that Arvind Kejriwal's convoy was in fact attacked by goons
These are goons affiliated to the Bharatiya Janata Party, is what the Aam Aadmi Party and the Delhi Chief Minister says. And that's the fiasco and the tussle at the moment. The ruling Aam Aadmi Party has demanded the Election Commission's intervention for action against BJP candidate Parvesh Verma. Listen in to what Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party have to say. देखिए, इस बार हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने वो इसी तरह से वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, इस बार हम Now responding to these allegations, BJP's candidate from the New Delhi seat, Parvesh Verma, he alleged that the car of Arvind Kejriwal, and we'll play those visuals out just a short while from now, the car of Arvind Kejriwal had actually ended up hitting two BJP supporters who have now been treated at Lady Hardinge Medical College in the national capital. Parvesh Verma also showed the video of the incident showing that Kejriwal's car crushed two men on the road. Take a look at Parvesh Verma's press conference as well. जहां जा रहे औरतें पीछे भाग रही इनको मारने के लिए। देखिए, ये भी सारे परवेश वर्मा के गुंडे होंगे जो इनको मारने के लिए भागे। तो देखो, गाड़ी के पीछे 50-50 औरतें भाग रही, उनसे बात करने के लिए नहीं रुक रही। ये है इनके कैंपेन की हालत। वो वीडियो में मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। एक उसमें युवक राजू लोग, वो इनसे नौकरी के लिए जब बात करता है और वो कह रहा है कि पानी के, बिजली के बिल हमारे बहुत महंगे आ रहे हैं, तो केजरीवाल उनको जवाब देते हैं, अच्छा क्यों भाई इतने, तो मैं आपके साथ में पूरी कॉलोनी को लेकर मंत्री के पास जाऊंगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर के बाहर में धरने पे बैठ जाऊंगा। ये 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये लोगों को कह रहा है, अच्छा बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, अगर मैं आप सभी को लेकर मंत्री के पास जाऊंगा और वो काम नहीं करेगा तो मैं उसके घर के बाहर धरने पे बैठ जाऊंगा। ये है इस आदमी की हकीकत। Let's not forget, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal is contesting against BJP's former MP Parvesh Verma from the New Delhi constituency in the upcoming Delhi Assembly polls, scheduled to take place on the 5th of February. जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये वीडियो पर कैप्चर है। दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, हम तो दिखा रहे हैं पूरा प्रमाण। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर इतना बड़ा पत्थर मारा गया। हमारे पास उसका वीडियो है। हम दिखा रहे हैं कि जो पत्थर मारने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये प्रवेश वर्मा जी के साथ सुबह शाम रहते हैं। और हम ये भी दिखा रहे हैं, अगर पूरे आप इन केसेस की डिटेल देखिए, कि ये मर्डर, डकैती, चोरी, मार पिटाई के एक नहीं, दो नहीं, अनेकों केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? प्रवेश वर्मा ने अपने साथ गुंडों को, हार्डन्ड क्रिमिनल्स को रखा हुआ है। और क्यों रखा हुआ है? घर घर पर्चे बांटने के लिए रखा हुआ है, जनसभाएं करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रखा हुआ है। Meanwhile, in a shocking development coming out of Kerala, 3 people have been arrested in connection with the death of a man who had joined the Russian military support service. Sandeep Thomas, Sumesh Anthony and Sibi, all from Thrissur, were taken into custody for allegedly luring youths to Russia with promises of lucrative jobs. According to police, the arrests followed detailed interrogations after complaints were filed by the wife of Binil TB, who died while serving in Russia, and the father of Jain TK, who was seriously injured and is now undergoing treatment in Moscow. The accused
face charges under the Immigration Act, human trafficking and cheating. Binil and Jain, both mechanical diploma holders, left for Russia in April last year, expecting jobs as electricians and plumbers. However, their families claim that Indian passports were confiscated upon arrival and they were sent to the front lines as part of the Russian military support service. Tragically, Binil's death was confirmed on the 13th of January, whilst efforts to bring him and his injured cousin-in-law back from the war zone were still underway. This incident raises serious concerns about illegal recruitment and exploitation in the shadow of the ongoing Ukraine-Russia conflict. All right then. Exactly 162 days after the heinous rape and murder of the 31-year-old junior doctor at Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital, Sanjay Roy, the sole accused, was held guilty of the crime by the Sealdah Sessions Court, which will pronounce the sentence in terms of quantum of punishment on Monday. The Central Bureau of Investigation, which investigated the case, has sought the maximum punishment for the crime. The victim's parents welcomed the verdict but added that there were more culprits in the rape and murder of their daughter. After the Sealdah court convicted Sanjay Roy, News9 spoke to Abhaya's parents about their response to the verdict and their plans moving forward. Here, what this courageous family seeking justice for their daughter now intends to do in this News9 exclusive. Ordeal of over 5 nightmarish months. Today, the Sealdah court in Kolkata delivered a judgment on the RG Kar College rape and murder case. We are here with the bereaved family to listen to what they have to say about it and what they plan in the future. Sir, ma'am, अब जो ये जजमेंट आया है, आपका इसके ऊपर क्या विचार विमर्श है और आप आगे क्या सोच रहे हैं? कल भी आपको बताया था, जो जजमेंट का जो पहला पड़ाव है उसको हम आज पार कर लिया और उसके बाद जज ने जो हम जो आर्गुमेंट रखा था उसका ऊपर थोड़ा कुछ बोला है, वो अगले दूसरे सीढ़ी उठने के लिए वो हमको बहुत काम में आएगा। আমারও সেই একই কথা। তদন্তর আমরা এক ধাপ মাত্র এগিয়েছি, তদন্ত আরও এগোবে, বিচার প্রক্রিয়া চলবে এবং আসল অপরাধী ধরা পড়বে, আমার মেয়ে প্রকৃত বিচার পাবে, এটাই আমাদের আশা। Just one more thing, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी आपके पिटीशन के ऊपर सुनवाई है। ये तो हम लोग उधर क्लैरिफिकेशन मांगा है, ये केस को हाई कोर्ट में वापस भेज दिया जाए। तो हाई कोर्ट हमारा कलकत्ता में आए, ज़रूरत पड़े कोर्ट में हम जा सकते हैं, जज के साथ बात भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना दिन मामला सुओ मोटो लिया है, हम कभी जाने नहीं पाया। ये बहुत दिक्कत का बात है, ये इतना दूर है और लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है दिल्ली में और जाने आने में बहुत टाइम का ज़रूरत है, इसलिए उधर हाई कोर्ट में होने से हमको ये जो दिक्कत नहीं आएगा। हाई कोर्ट कोलकाता में भी है और 15-20 किलोमीटर के अंदर है हमारा घर से, हम लोग इधर आके थोड़ा कोर्ट में अटेंड कर सकते हैं और इधर बांग्ला भाषा भी चलता है कोर्ट में। जस्ट वन थिंग सर, कई जो चीज़ें आपने कई सवाल जो उठाए थे उनके बारे में कोई बात नहीं हुई, जैसे कि कई और लोग थे, बायोलॉजिकल सैंपल्स के बारे में जो बात है, इस बारे में कोर्ट की कोई प्रतिक्रिया अभी तक बाहर तो नहीं आई है। कोर्ट तो अभी तक कुछ बात नहीं सुना है, कोर्ट का पास हम रखा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगा है, ये हम बात बोले कि नहीं बोले, ये आप सुप्रीम कोर्ट से सुन के आइए, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में हम के मामला किया है। जब सुप्रीम कोर्ट इसको वापस हाई कोर्ट में भेज देगा तब सुनेगा। पहले दिन जब केस हाई कोर्ट में हम लोग दर्ज किया है, उस दिन सीबीआई का लॉयर बोल रहा था कि हम लोग तो काम ठीक से कर रहा है, तो तीर्थंकर घोष जज ने बोला है आप लोग काम ठीक से किया है तो ये माँ बाप इधर किस लिए खड़ा हुआ है। ये सब आएगा, हम लोग उधर खड़ा रहेगा तो जज जो काम करेगा ठीक से काम करेगा। हमको मालूम है, हमको आइन तो हम नहीं जानता है, आज लड़की का ऐसा घटना घटी है इसलिए तो हमको कोर्ट का और इधर दर्जा खटखटाना पड़ना है। कभी कोर्ट का दरवाज़ा हम पार नहीं किया है। एक दो एफिडेविट का जरूरत पड़ता, लोकल कोई किसी से बोलता वो करके ला देता। कोर्ट का भी हम कभी कोर्ट नहीं पहचानते थे, अभी पहचानना पड़ रहा है।
और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है। जाएगा, जितना दूर जाना है जाएगा। मेरा लड़की का जस्टिस के लिए हम लोग जाएंगे। For normal everyday Indians who've never had to, access the law and order services or go to a court, this is what this unfortunate couple has to deal with now. They must go to the very extreme end of the Indian judiciary to get justice for their daughter. Shifting our focus to the inauguration of President-elect Donald Trump, as the Trump 2.0 Republican administration is going to be sworn in tomorrow. President-elect Donald Trump has arrived in Washington ahead of his inauguration, marking his return to power. Now, Donald Trump is set to hold a rally with supporters at the Capital One Arena in downtown Washington on the eve of his swearing in. The inauguration celebrations are set to include 18 galas, with Donald Trump attending 3 official events. And today, Trump will participate in a major Make America Great Again victory rally, a MAGA victory rally at the Capital One Arena, followed by a candlelight dinner with his supporters. Now, among the distinguished guests that have in fact been appointed and invited to the inauguration ceremony are, of course, tech billionaires Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, and TikTok CEO Shou Chew as well. You've also got all of those political figures and those names flashing on your screens. You also have outgoing President Joe Biden, former Presidents Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, who are expected to be in attendance alongside Vice President Kamala Harris, and foreign leaders including Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Hungary's Viktor Orban, and Argentina's Javier Milei have also received invitations. However, it is unclear who is going to finally attend this particular ceremony, ladies and gentlemen. Donald Trump to be sworn in as the 47th U.S. president. He made his way into Washington, and pyrotechnics and fireworks kick-started the celebrations on the swearing-in ceremony eve. That's Donald Trump and the First Lady accompanying POTUS. As Washington prepares for the inauguration, you've got 25,000 law enforcement officers that have been deployed. There's a security blanket as far as the eye can see in Washington, D.C. 7,800 National Guard troops are going to be placed and stationed on standby. Capitol is going to be under heightened security alert. That's right, the administrative capital and the Capitol building as well. Donald Trump's inauguration. A lone wolf attack seems to be the prime focus of all the security agencies over there. We've seen already how an attack was carried out on the president-elect. Amidst the campaign, concrete barriers to block downtown access have been stationed. We're talking about a 30-mile radius. And whilst Donald Trump is going to be in office, on his first day in office, more than 100 executive orders are expected. The borders are, earlier said, that the crackdown on immigration could begin as early as Tuesday, and immediate actions on immigration, energy and trade are expected to follow as well. Pardons for the January 6th riot defendants, something that Donald Trump has been promising and talking about for the longest time, seems to be a motive that is set for day one. Legal challenges on immigration and the environment are likely to be executed as part of his 100 executive orders that Donald Trump is going to take part in and at. Now, that's again POTUS and the First Lady attending those ceremonies, of course, all placed to welcome Donald Trump to Washington, D.C. And tomorrow at about 8 a.m. local time, ladies and gentlemen, is when the gates will open up. After 40 years, this swearing-in ceremony is going to be taking place indoors, and then a proper parade, the review of the forces, his speech, all of it lined up. News9 is your place to catch it all.